Hello student, welcome to fusion classes. तो आज हम काम करना पहले alternating current जेंटा की यूनिट नंबर 4 में আছে चैप्टर नंबर 7 रे আছে। तो पहला पहले हम काना alternating current बेले काना current whose magnitude change continuously but direction change periodically is known as AC or alternating current. Current or magnitude टा continuously change होगा, direction टा periodically change होगा, स्लाइड को हमें alternating current बोलते हैं। Normally क्या होता है जब ग्राफ नहीं भी बुझना x एक्सिस ला हमें टाइम में रखा y एक्सिस ला हमें करंट में रखा तो लगाना अभी ग्राफ यथा मैक्सिमम वैल्यू माइनस का क्या स्क्वायर नॉर्मली क्या 0 लगाना t/2 है t मैक्सिमम वैल्यू क्या मैं इंडिकेट करना I नॉट है। तो एबे हम बुझना पहले कंटीन्यूअस में लगा कंटीन्यूअस वाला हम कहां लगा पहले रफली आपके डायग्राम में नो बुझिएला 0.1 0.2 0.3 0.4 0.8 y एक्सिस में भी है 1 2 3 4 तो इनो में जाने पड़ना के लिए 0.1 रे वैल्यू होचे 1 0.2 रे वैल्यू होचे 2 0.3 रे वैल्यू होचे 3 0.4 रे वैल्यू होचे 4 तो ई जागा कान होचे बोले कंटीन्यूअसली वैल्यूटा चेंज होते जाচ্ছে आउरे जाके हमरे कान होले वैल्यूटा सदा हिसाब डाउन हो जाइबो तो गुटे टाइम रे देखमा फिर आउरे टाइम देखबे कान तो वैल्यूटा चेंजेस होते जाଉଛି एटा को हम हमें कंटीन्यूअस चेंज करबे आउरे ये सोचे बिले ना डायरेक्शन चेंज periodically तो कान हो जे बिले 0 रु t/2 टाइम रे ए कान होचे पॉजिटिव डायरेक्शन होचे t/2 रु t टाइम रे कान होचे नेगेटिव होचे फिर से कान है पॉजिटिव फिर से नेगेटिव तो यार कान है नाम है डायरेक्शन का periodically चेंज होचे alternating current में कान बुझना बिले में current whose magnitude change continuously but direction change periodically এটা को हम alternating current बोलते हैं এটাকে আমরা লিখি পারলাম বলে I equal to I naught sin omega t বুঝলা কি I naught বলে কাটা বলে I naught বলে বলে मैक्सिमम current जिन वैल्यू हमें इंडिकेट करू छो এটা কাটা বলে ध्यान देना बले मैक्सिमम करंट ऑलरेडी तो बुझमा ना बले अब नेक्स्ट में बले हमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ अब ये अल्टरनेटिंग करंट जहां अल्टरनेटिंग ईएमएफ सिमिलरली तक का हो ईएमएफ whose magnitude change continuously but direction change periodically is known as alternating EMF डेफिनेशन पूरा कहां पे इसको मिला तो এটা কি আমরা করব अंदाज जंतु तो करना এটা হবে t/2 এটা হবে তোমার t এটা হবে তোমার EMF এই জায়গাটা আমরা লিখব বলে E equal to E naught sin omega t E naught बोला क्या है मैक्सिमम EMF मुझे लगे
So normally पिले our India रे general voltage कितने ऐसे मिले 220 220 volt and 50 hertz frequency कितने थी 50 hertz frequency में क्या मिले गोटे सेकंड में कितने कंप्लीट साइकिल करबो सेलेक्ट हम फ्रीक्वेंसी बोली गई तो डिफरेंट कंट्री रे डिफरेंट सी यदि आप एग्जांपल हम यूएसए रे कितने बसी मिले 110 volt and 60 hertz तो नॉर्मली काना आसी पिलिया हम देखो हमर प्रॉब्लम हम काना करबा बाहर गुटे मोबाइल के किनि आनमा अलगा कंट्री सब इंटा की एप्पल सस्ता मिलसी आईफोन आसन घिनि आनसी तो सेनर कंट्री हिसाब से चार्जर के तैयारी कर हे दिबा इंडिया रे यदि हम से चार्जर की यूज करबा हम चार्जर खराब है कारण है कि डिफरेंट कंट्री डिफरेंट वोल्ट एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थीसी जेता को एग्जांपल लेना इंडिया रे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज थीसी यूएसए रे का थीसी 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज थीसी तो एबे काना बिले हम अल्टरनेटिव करंट वाला काना जानना अल्टरनेटिव ईएमएफ वाला काना जानना नेक्स्ट हम काना पढ़ा बिले डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंट में काना बिले current whose magnitude and direction remain same जेन करंट रो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का रिमेन सेम होगा ताकि हम कहमा डायरेक्ट करंट और रेगा हम कहमा डीसी बुझिए अभी जब हम ग्राफ काटना करना जन वैल्यू जो है वैल्यू 5 से लगा 5 5 5 के मतलब चला जाए हम डीसी ई जागा रे गुटे हमर क्वेश्चन आसी पिले फ्रीक्वेंसी डीसी रे फ्रीक्वेंसी केते फ्रीक्वेंसी बोले काना बोलथिना 1 सेकंड रे कंप्लीट साइकिल केते क्रिएट करबा तो ई जागा रे फ्रीक्वेंसी आसी पिले 0 सर कुसारे आसी डीसी रे फ्रीक्वेंसी केते पिले जागा 0 आ गुटे भी क्वेश्चन आसी पड़े टाइम पीरियड केते है ना देबा पिले टाइम पीरियड बोले काना पिले 1 बाय फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कितने अच्छे मिल जाएगा रे 0 तो आंसर आ सकले इंफिनिटी तो बिले हमें एसी बेले काना जानना डीसी बेले भी काना जानना डीसी रे गुटे इंपोर्टेंट जिनिस बिले फ्रीक्वेंसी केते सी और टाइम पीरियड केते सी क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी इज 0 और टाइम पीरियड इज बिले इंफिनिटी नेक्स्ट बिले ता हम मीन वैल्यू काना नेक्स्ट क्लास रे